request Gautam to brief us on Raosaheb concept. After that, I'll introduce you briefly. Actually, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको introduce करने की, but formal introduction होगा, and then we will start the space. हर space की शुरुआत हम एक music से करते हैं. गौतम जी उस music के बारे में आपको बताएंगे, तो एक ही second में आपका लेता हूँ यहाँ पे. Yes, over to you, Gautam, please. Rashmi, good evening. Thank you for joining us. Basically, Maharashtra had a very renowned author and a literary figure by the name of Pula Deshpande, and he had written many life stories of various characters from different walks of life. One of them was a character named Raosaheb, hailing from Belgaum, who was a great lover of music, people, and a very friendly person, basically. And he had what is called as a katta. Katta in Maharashtra is basically a place where friends get together after work to just have some fun, get to know each other, and get over the stresses of work and daily life. So, in keeping with that theme, Prasad started this space around a few weeks ago, and we've kind of named it after that character, where a bunch of us get together to have non-political discussions about various topics. And then to celebrate the Ganesh festival, which, as you know, is very, very big in Pune, we have hosted 10 different prominent personalities over the last 10 days, and we are very, very happy. We could not have even imagined this would happen. But you are basically the showstopper, because you are going to end this innings with an absolute bang. So, a brief introduction about our platform, and thank you very much for joining us. Yes, thank you, Gautam. रश्मि जी की पहचान कराना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं छोटी कोशिश करता हूँ. Rashmi Samant is an entrepreneur, activist, and student leader who created history by being first female Indian to be elected president of the esteemed Oxford University Student Union. Her remarkable victory was achieved by historic turnout and overwhelming margin. A campaign which called for decolonization of the university was truly groundbreaking, symbolizing and the growing accessibility and inclusivity at Oxford. Rest is a history, and I don't want to be मैं नहीं चाहता हूँ मैं भी और समय लूँ. Rashmi ji, I would request you to brief us, and then we'll start the question and answer. First of all, thank you so much for joining us. Over to you, Rashmi ji. Thank you so much, and I think it's an honor to be among you all as part of the auspicious, Ganesh Chaturthi series that you're having. The honor is all mine. Well, क्या कह सकते हैं, ये तो एक तरह से कहानी ही है. तो आई कम फ्रॉम उडुपी. तो उडुपी ऐसे कर्नाटका के वेस्टर्न कोस्ट में है. एक छोटा सा टाउन है. उसे टेम्पल टाउन कहा जाता है. भारत का हर 500 मीटर में आपको एक मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे सदियों से करीबन 1000 सालों से अन्नदान, अन्न सेवा चल रहा है. इसलिए तो इट्स द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई हैव. जैसे पुणे के अपने एक स्पेशलिटी होती है, तो पुणे में जो पला बड़ा है, तो वो गणेश फेस्टिवल को ना जाने का से बिना भूलने से अपनी पहचान है. में भी माना जाता है. दक्षिण में दक्षिण माना जाता है. कृष्ण का जो मंदिर है बहुत ही स्पेशल, बहुत ऐसे मंदिर जुड़े हैं 500 मीटर की. पूरी उस टाउन को ही भारत का टेम्पल टाउन माना जाता है. तो दैट्स बीन द अपब्रिंगिंग. ऐसा भी नहीं है कि मेरे माँ बाप वहां से Rashmi ji, so very sorry to interrupt you, but we are getting a lot of static from your voice, so we might be having some range issues. So if you could just maybe try to move around and get till we get a little better range.
Is this better? Or significantly better? Yeah, significantly better. Thank you. I think she's rejoining. We'll wait for a minute. Yes, ma'am. Can you hear us now? Yes, sir. We can hear you. Is Namaste, better? Rashmi. Yeah, much better, much better. Ji. Yeah. I've got full, I think, range. Maybe the phone was a little far away from me. Maybe that's the reason there was static. I hope this is much better. Yes, yes, it is. Did you catch what I was saying initially, or do you want me to repeat the whole I thing? would request you to repeat so our listeners can hear you actually. अच्छा ठीक है, no worries. So namaste, first of all, and I think I'm very honored to be among all of you during this auspicious time of Ganesh Chaturthi and the entire series, which is really portrayed and which is really curated around that. So firstly, I think thank you all for putting this together. Secondly, तो मेरी कहानी क्या है? मैं आती हूँ उडुपी से, जो एक बहुत छोटा शहर है भारत के दक्षिण भाग में, द वेस्टर्न कोस्ट. वेरी ब्यूटिफुल, ऑल्सो नोन एज द टेम्पल टाउन ऑफ भारत. हर 500 मीटर में आपको एक मंदिर दिखेगा जो कि एक संप्रदाय से जुड़ा है ऑफ सेवा और परोपकार. अगर आप देखोगे वहां पे तो हर मंदिर में लगभग 1000 सालों से लगातार विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी क्या क्या कहते हैं स्टॉपेज, अन्न सेवा चल रहा है. ऐसे आप कहाँ देख सकते हो दुनिया में कि 1000 सालों से ऐसा कोई संप्रदाय चल रहा हो? तो दैट इज द काइंड ऑफ कल्चर विद विच आई ग्रू अप. और ऐसा भी नहीं है कि मेरे माता पिता उडुपी से हैं और मैं किसी शहर में पली बड़ी हूँ. मैं भी वहीं पे पली बड़ी हूँ, वहीं पे बॉर्न रेस्ड, 21 साल जीवन के वहीं बिताए मैंने. And that was mostly like the kind of upbringing I've had. Often लोगों में उनकी ख्वाहिशें भी छोटी होती है, बट ऐसा नहीं है. एंड आई थिंक पुणेकर्स ऑल्सो डू रिलेट अ लॉट टू दैट, क्योंकि जब मैं पुणे आई थी तो मैंने रियलाइज किया कि महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल तो पुणे है. एंड यहाँ पे तो लोग इतने दे सो अवेयर. एंड सबसे अच्छे क्वेश्चंस, आई विल टेल यू, सबसे इवॉल्व्ड क्वेश्चंस, सबसे वेल इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस मुझे पुणे के लॉन्च इवेंट में आए थे. बाकी शहरें जो होती हैं, बैंगलोर हो या मुंबई हो या दिल्ली हो फॉर दैट मैटर, कहने के लिए तो मेट्रोपॉलिटन है, बट कल्चरली इवॉल्व्ड, culturally aware, philosophically aware, तो I think it's the tier 2, tier 3 cities. And I think वो बहुत शर्म की बात है कि हमें थोड़े small town कहा जाता है, whilst there's so much more to all of us than that. तो पहले से शुरू से ही बहुत सपने थे, बड़े सपने थे. एंड आई थिंक एज अ ऑल्सो एज अ प्रोडक्ट ऑफ मकाउले एजुकेशन सिस्टम, हम वेस्टर्न आइडियल को सुप्रीम मानते हैं कहीं ना कहीं. तो भले ही कल्चरल एस्पेक्ट बहुत हो मेरी अपब्रिंगिंग में, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि हाँ, अगर सबसे अच्छी डिग्री पानी हो जिंदगी में तो ऑक्सफोर्ड जाएंगे, विच इज रैंक्ड 1 इन द वर्ल्ड. मे बी अब अभी मेरी अगर सेम डिसीजन लेना होता तो मेरा ओपिनियन अलग होता, नाउ दैट आई नो सो मच अबाउट दीज थिंग्स. बट जनरल परसेप्शन बच्चों में, यंग लोगों में यही होता है. एंड देन मैंने सोचा कि अरे बाहर जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो रैंक 1 है जिसका अभी दुनिया में. तो उस हिसाब से हमने अपने एप्लीकेशंस बनाए, डाल दिया. और एप्लीकेशन की बहुत एक खूबी भी ये भी थी कि जब भी हम ना छोटे से छोटा एप्लीकेशन भी भरते, किसी को तो दिखाते हैं
जो वहाँ पढ़ा हो पहले, या फिर गया हो। हम ऐसे रैंडमली तो एप्लीकेशन कहीं के भरते नहीं है, मामा से पूछ लेते हैं, किसी सीनियर से पूछ लेते हैं, कजिन से पूछ लेते हैं। पर मजे की बात ये थी कि कोई पूछने के लिए मेरे सर्कल में था ही नहीं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो। तो ऐसे ही एक तुक्का तुक्का जैसा था मेरा एप्लीकेशन, तो ऐसे ही मैंने भर के दे दिया। And I forgot about it after that. And I think almost 3 months later, I get this email saying, you've been selected for the interview round. And I was happy कि अरे I made it till the interview round, shortlist हो गई मैं ऑक्सफोर्ड के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। I did the interview, and interview के बाद I didn't expect to get in, but 1 डेढ़ महीने में email आया, congratulations, you're in। तो वही बात होती है, हम एस्पायर करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं जिंदगी की भागदौड़ में। हमें लगता है कि हम अपने आप पे रोक लगा देते हैं और लगता है कि हमें कि दिस इज एज फार एज वी कैन गेट। बट आई थिंक वहीं पे हम हारना चालू करते हैं। सो इट वाज ऑल्सो अ लेसन ऑन एस्पिरेशन कि जितना आप ट्राई करोगे उतना आप पा सकते हो जिंदगी में, नो मैटर आप कहाँ से आते हो, आपकी क्या बैकग्राउंड रही हो, आप शहर के ये सो कॉल्ड बड़े आईबी स्कूल्स में ना पढ़े हो, स्टेट सिलेबस के स्कूल्स में पढ़े हो, तब भी आप एक इंटरनेशनल लेवल पे compete करके यू कैन गो प्लेसेस। तो वो एक तरह से एक मैसेज था तब के लिए। एंड देन आई मेक इट देयर, एंड जाते ही मैंने मतलब पहले तो मैं बहुत ही खुश थी, फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो आई वाज लाइक ऑन द मून, ओवर द मून, सेलिब्रेटिंग, बहुत खुश थी कि ओ आई मेड इट, दुनिया का सबसे फर्स्ट जो माना जाता है रैंक 1 विश्वविद्यालय। तो वो एक तरह से यूफोरिया था काफी समय के लिए। उसके बाद ऐसा था कि उसके बाद ऐसा था कि द यूफोरिया ऑल्सो गोज अवे आफ्टर अ वाइल। So the euphoria also went away with time, and then when the euphoria went away, and I was able to see things for as they are, it was quite the sort of eye-opening experience for me, at least, कि I kind of saw what is going on, and मेरे लिए I think I can make a very good Ganesh example here. I used to go by this corridor in my college to reach my library, क्योंकि वहाँ पे बैठ के काम करती थी मैं। तो हर शाम को I used to pass by this गणपति की मूर्ति, जिसको उन्होंने ग्लास केस में एज अ क्या कहते हैं ट्रॉफी रखा है, जैसे हम रखते हैं ना ग्लास केसेस में चीजों को डिस्प्ले करते हैं। मैं ऐसे देखती थी, एक आध बार मैंने देखा, एंड देन आई जस्ट इग्नोर्ड। आई वाज लाइक वाओ, इन्होंने भी गणपति रखा है यहाँ पे, इट्स अ गुड थिंग। देन आई यूज्ड टू आई स्टार्टेड पेइंग क्लोजर अटेंशन, एंड आई सॉ द inscription on the display. And then the inscription was so demeaning. It said, 11th century India, lotus, shaped Ganpati, and, made with so and so. It was literally describing it as an object and not giving it the kind of respect it deserves or attributing any kind of respectful stature or anything to it. It was kind of a trophy. And then I started to feel कि हाँ मतलब this is not okay, there is something that is not all right. And then I took the uncomfortable Oxford tour वहाँ पे, and then I started learning more about the history of the university, कि how did it come along, and what is going on, what is not going on. And then I realized that there's such a huge colonial past, and that the university in the couple of centuries prior was actually actively training these British officers on how to rule, on how to divide, and how to maintain control on colonies. एंड बेसिकली जो पैसा आता था यूनिवर्सिटी में, वो इन्हीं की जो लूटपाट होती थी, लूटपाट जब ये खत्म करके रिटायर होके वापस यूके आते थे, तो ये लूटपाट ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देते थे कि आप हमारे नाम से कुछ प्रचार करो करके। अपने बेसिकली पाप धोने के ये लोग किराया टाइप देते थे। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट, आई स्टार्टेड टू फील कि यार ये तो भारत में भी इतना भ्रम है कि ऑक्सफोर्ड नंबर 1 है, बाहर भी इतना बड़ा भ्रम बना है कि ये नंबर 1 है, पर यहाँ तो मतलब इसकी हिस्ट्री इतनी ये है, घिनौनी है।
फिर मैंने देखा कि हमारी प्रेजेंट भी काफी मतलब इतना भी सही नहीं है। प्रेजेंट में भी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स है हमारे ऑक्सफोर्ड में, वहां पे भी जो बड़े बड़े स्टैचूज लगे हैं सारे ये स्लेव ओनर्स के हैं, तो उन्हीं को आज भी ग्लोरीफाई किया जाता है। आप अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में भी यही पढ़ाया जाता है कि कॉलोनाइजेशन वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर इंडिजिनस पीपल, इट सिविलाइज देम, जैसे कि हम लोग अनसिविलाइज थे कॉलोनाइजेशन से पहले। तो ऐसी चीजें मतलब देखने को मिला। एंड देन आई वाज लाइक दिस इज नॉट ओके। एंड यू नो हाउ डू यू क्रिएट चेंज? आई हैव नेवर बीन अ रिबेल विदाउट अ कॉज। आई हैव ऑलवेज थॉट कि चलो चेंज करेंगे, सिस्टम से करेंगे। तभी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जो यूनियन की इलेक्शंस है स्टूडेंट यूनियन की, तो उसके एप्लीकेशंस खुले थे। तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो कोई भारतीय छात्र संघ अध्यक्ष रहा भी नहीं है, इनका हिस्ट्री तो 1000 साल का है पर कोई रहा नहीं है। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये काफी प्रेस्टिजियस भी माना जाता है, काफी कट थ्रोट इलेक्शंस होते हैं। बट मैंने सोचा कि चलो लड़ लेते हैं अपनी डीकोलोनाइजेशन प्लेटफॉर्म पे, कुछ तो अवेयरनेस बनेगा और शायद आगे चल के कोई भारतीय बन जाएगा छात्र संघ अध्यक्ष। तो इसी मेंटालिटी से मैंने वो लड़ा था, एक एक मूवमेंट खड़ा करने के लिए, एक बात कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म के दौरान। एंड देन आई फॉट द इलेक्शन, and you won't believe it, the power of silent majority was so huge, the mandate was so huge, it was a historic election, the turnout was amazing, it was historic, like historic in every sense कि इतने लोग कभी बाहर नहीं आए थे वोट देने। एंड इट वाज अ हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट, एंड the victory margin was also huge, it was so huge, it was a never before seen victory margin। ऐसे मुझे शायद 54% की डायरेक्ट मेजोरिटी मिल गई थी राउंड वन में ही। ऐसी मतलब इतनी बड़ी मेजोरिटी हो गई। एंड दैट रियली टॉट मी अ लेसन और टू अबाउट साइलेंट मेजोरिटी, कि मैंने शायद बहुत मतलब कैंपस के बच्चों की दिल की बात मतलब वहां पे जिक्र किया मैंने उसका, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में आज के दिन पे 150 देशों से लोग आते हैं पढ़ने पढ़ाने। तो उनकी काफी शेयर्ड हिस्ट्री है भारत के साथ, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, दे रियली रिलेट टू दिस होल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ वेरी सुप्रीम सिविलाइजेशन, इवॉल्व सिविलाइजेशन विच वाज लूटेड एंड सब्जुगेटेड बाय द कॉलोनाइजर्स। और आज हमें सुनने को मिलता है कि अरे हम ही थे जंगली और हमें इन्होंने आके सभ्यता सिखाई। तो दिस वाज अ सेंटिमेंट विच रिवर्बरेटेड एवरीथिंग। इफ आई वांट टू मेक अ वेरी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, तो अभी जो भारत ने G20 को G20 बनाया और अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग मैसेज कि भारत इज द ओनली कंट्री विच कैन डू इट, क्योंकि भारत में ही वो एक तरह से इस चीज को लेके सहानुभूति है, इस चीज को लेके अंडरस्टैंडिंग है, और इतना बड़ा दिल है कि वो सुप्रीमेसी के चक्कर में बाकियों को बढ़ने से ना रोके, बाकियों को सब्जुगेटेड ना रखे और बाकियों को भी बढ़ने का मौका दे, बाकियों को भी अपना आइडेंटिटी रिक्लेम करने का स्पेस दे। सो इट टर्न इनटू मैसिव मूवमेंट, एंड दैट्स हाउ आई वन द इलेक्शन। जीतने के बाद तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया हो, भारत की मीडिया हो, डिप्लोमेटिकली उसको बहुत ही बड़ा सक्सेस माना गया। इनफैक्ट इतना बड़ा सक्सेस कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्सी एलिस, आई थिंक एलेक्सिस था उस टाइम पे वो थे, उन्होंने ट्वीट किया तो ये तो पूरा लिविंग ब्रिज बन गया भारत और यूके के बीच में। और बहुत मतलब इसकी तारीफ हुई, ये हुआ वो हुआ। चाइना में एक कहावत है कि अगर आप किसी को निकालना चाहते हो ना, तो आप क्या कहते हैं उसके लिए, अम, क्या कहते हैं, एक रास्ता निकाल दोगे, आप उसके लिए जस्टिफिकेशन निकाल दोगे। किसी को अगर गलत साबित करना है, यू विल फाइंड अ जस्टिफिकेशन। दिस इज अ वेरी कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट, कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पे आया था, जब माओ अपने ही लोग जो उसके साथ लॉन्ग मार्च में थे, जिन्होंने पार्टी बांधा, जिन्होंने कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश किया चाइना में, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनकी जो पर्ज थी उसके लिए उसने वो पूरा जो कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया था। तो वहां पे उसने ये पूरी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस की थी ऑफ कम्युनिज्म, जहाँ पे आप अगर यू डोंट वांट समवन as a leader, as someone who's bringing some change, then you put up uh, you know accusations against them, आप उन पे इल्जाम लगा दो। इल्जाम आप ऐसे लगा दो कि आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पर वो इतने घिनौने इल्जाम है ना, ऐसे मतलब सोशली ऑस्ट्रेसाइजेबल इल्जाम, कि सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर दे विदाउट एनी प्रूफ।
तो ऐसे कम्युनिज्म के टाइम पे वो अपने ऑफिसर्स पे जो आगे बढ़ते थे उन पे लगाते थे कैपिटलिस्ट होने की इल्जाम लगाते थे विदाउट एनी प्रूफ कि आप कैपिटलिस्ट रोडर हो, और एक आध पहले से कुछ ले लेते थे और उसको बोल देते थे कि आप कैपिटलिस्ट हो और उनको मार देते थे टू रिमूव देम फ्रॉम पावर। तो ऐसे ही एक मतलब दे स्टार्टेड दिस एंटायर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट मी। एंड दुनिया में सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप अनफॉर्चुनेटली हिंदू आइडेंटिटी है। आप अगर हिंदू को गाली दे दोगे और बोल दोगे हिंदू है, एक्सट्रीमिस्ट है, यू नो इस्लामोफोबिक है, तो ऐसे ऐसे जो इल्जाम होते हैं ना, इसका कोई आपसे साक्षी नहीं मानता है, इसको मान लेते हैं लोग। इतना इन्होंने इस स्टीरियोटाइप को एस्टैब्लिश किया है ना, थ्रू एकेडेमिया, थ्रू पॉपुलर कल्चर, थ्रू फिल्म्स, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, थ्रू सॉन्ग्स इवन, इतना विलिफाई कर दिया है कि ये एक मात्र तरीका बन जाता है कि ये वाला आप इल्जाम लगा दो और आप तो बन गए, बने बनाए विलन मिल गए। और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे पोस्ट निकाले जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं हार्मलेस, मतलब बिल्कुल हार्मलेस है। आप अगर किसी लॉयर को दिखाओगे, आप अगर किसी किसी भी मतलब इवॉल्व इंसान को दिखाओगे, वो भी कह देगा अरे ये तो है ही नहीं, दिस इज अ वेरी मैच्योर पोस्ट व्हिच इज बीइंग मेड। तो उन्होंने ऐसे बातों को मरोड़ा तरोड़ा और ऐसा मेरा विलिफिकेशन कैंपेन चलाया कि I was being I was being subjected to a very racist attack, where I was being called different names. I was being, harassed. Where I was being vilified. Even if I was being harassed, मैं ही villain थी, तो मेरा harassment का कोई मतलब space नहीं था redressal का, क्योंकि आप किसी को vilify करके उसको harass करोगे ना, वो आके कह भी नहीं पाएगा कि अरे मैं शोषित हूँ, क्योंकि उसको आपने villain बना दिया है। तो बात इतनी बिगड़ी कि आई स्टार्टेड गेटिंग हॉरिबल डेथ थ्रेट्स, एंड देन आई हैड टू रियली रिजाइन, बट आई रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, समथिंग आई वाज ड्यूली इलेक्टेड टू इन अ वेरी फेयर मैनर। बट मैंने झगड़ा, मतलब मैंने वो फाइट नहीं छोड़ा, एंड आई फॉट। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, मैंने यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट किया, और उसको उन्होंने मतलब दबाने के लिए उसको लंबा खींचने की कोशिश की, जो नॉर्मली करते हैं, दुनिया भर में करते हैं, भारत में भी करते हैं, लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, हड़काने की कोशिश करते हैं, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, हर चीज जो करते हैं नॉर्मली, मेरे साथ भी वहां पे हुआ। पर मैंने तो ठान लिया था कि अगर ये डिग्री देंगे ना देंगे तो भी हम ये फाइट आखिरी तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें ऐसे ही ट्रीट नहीं कर सकते हैं, एंड दे नीड टू नो दैट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू ट्रीटिंग अस लाइक दिस। एंड फाइनली जो लोग थे जिन्होंने लिखा था, एक तो ऑक्सफोर्ड का हिस्ट्री प्रोफेसर था जिसने लिखा था कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, एंड शी कम्स फ्रॉम उडुपी विच इज हॉटबेड ऑफ हिंदुत्व, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे उसको एस्टैब्लिश किया था। उनको फिर निकाल दिया गया। जो स्टूडेंट्स ने ऐसे सब कुछ अनाप शनाप लिखा था, तो उनपे भी मतलब कार्रवाई हुई। And we were able to establish that you can't get away with saying these horrible things by making ad hominem attacks against people you don't like, especially the Hindu people. You just simply can't make them ready-made victims क्योंकि आप उनकी सभ्यता को पसंद नहीं करते हैं। So that was something we were able to establish. फिर ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ये बुक क्यों लिखा। बेसिकली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 2021। समथिंग आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ कि इन्होंने मुझे इतना मतलब ये करने की कोशिश की, डिमोरलाइज किया, अटैक किया, सब कुछ किया, फिर भी आई कंप्लीटेड माई डिग्री, आई ग्रेजुएटेड विद मेरिट। Even Indira Gandhi is, she studied at Oxford, but she's not a graduate. She dropped out of Oxford. She's a double, dropout from there. But I'm very happy that, I was able to complete everything despite being treated so badly. And, I was able to get a merit at that course as well. बट नैरेटिव का ना ऐसा है कि द अदर साइड नोज हाउ टू सेट नैरेटिव। अगर आपने लॉफुली भी अगर कोई भी केस जीता हो ना, तो वो अपनी कहानी को ना दोहराते रहते हैं। जैसे आप गोधरा का देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है मोदी जी को, पर फिर भी आज भी वो डॉक्यूमेंट्री यही निकालते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात मोदी जी हैं। आज भी बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो, आज भी आर्टिकल्स हो, हर साल इस मुद्दे को कुरेदते हैं और यू नो मासूम लोगों को गलत ठहराते हैं, और जो हिंदुओं के साथ जो हुआ था उस चीज को कभी आगे आने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि
भले ही हमने केस जीता, लॉफुली जीता, सारा जो प्रूफ है मेरे साइड पे है। जो 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 प्रोफेसर ने कहा था ना कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर ए हिंदू प्रेसिडेंट, उसने लिखत में कहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बस क्लेम कर रही हूँ कि बंद दरवाजे के पीछे उन्होंने ऐसे कहा और इससे मुझे लगा कि मैं शोषित हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा हुआ है जो उन्होंने ऑनलाइन डाला है, आज भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में ये सारे एक्यूजेशंस कर रहे हैं। फिर भी बोला जाता है अरे शी हैड टू रिजाइन बिकॉज शी वाज रेसिस्ट, नॉट बिकॉज शी वाज सब्जेक्टेड टू अ रेसिस्ट अटैक। तो ये लोग ना डिस्टॉर्ट करके, सत्य को डिस्टॉर्ट करके चीजें लिखना चालू करते हैं। कांग्रेस वाले आज भी आके मेरे वॉल पे लिखते रहते हैं अरे ऑक्सफोर्ड की ड्रॉप आउट आ गई आ गई, जबकि उनके खुद के दो प्रधानमंत्री जो रहे हैं डबल ड्रॉप आउट्स रहे हैं। इंदिरा गांधी खुद ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट रही है। बट इनको कहानी बनाने में क्या है, ये लोग कहानी बनाते रहते हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारा सच कहते रहें, हम इसको एस्टैब्लिश करें, हम इसके बारे में लिखें, प्रूफ के साथ लिखें, बुक्स लिखें, लोगों से बात करें इसके बारे में। क्योंकि नैरेटिव वॉर को हमें इट इज अ रियलिटी, हम चुप नहीं हो सकते कि अरे सच हमारे साथ है, इट्स ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू पुलिस, थ्रू यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स। ये मुद्दा तो भारतीय राज्यसभा में भी डिस्कस्ड है, जहाँ पे मेरा पक्ष मतलब उन्होंने पूरा विद प्रूफ रखा है। 0 आवर ऑफ द राज्यसभा 21 मार्च का अगर आप देखोगे 2021 का, तो आपको मिल जाएगा। 15 मार्च 2021 का, तो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में इसका मोशन है विच टेक्स माई साइड, विच सेज आई वाज ट्रीटेड बैडली। फिर भी ये लोग जो कहानी लिखना चाहते हैं ना, सिलेक्टिवली मीडिया में लिखते हैं और लिखते रहेंगे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको कम्बैट करते रहे, नो मैटर हाउ हार्ड इट फील्स, हाउ हॉरिबल इट फील्स ऑन अ डेली बेसिस। जब लोग आप पे मतलब घिनौने इल्जाम लगाए, डे बाय डे आप पे वही मतलब झूठ दोहराए आप पे, तो आपका भी फर्ज बनता है। एंड दैट इज माई स्मॉल एफर्ट आई फील टू सॉर्ट ऑफ प्रिजर्व दैट, कि हमारी स्टोरी क्या है, हमारा सच क्या है, जस्ट टू कीप रीएस्टैब्लिशिंग इट एज मेनी टाइम एज इट टेक्स, to make sure that their lies don't win, because they're going to keep repeating। आप उनको कितने भी बार आप उनको समझाए, उनको पता है कि हमें कंसिस्टेंटली झूठ बोलना है, उनके मन में ये साफ है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमें लगातार सच का जो रिपीटिशन है हमें करना है। जितनी बार वो झूठ बोलेंगे उतनी बार हम इसको काउंटर करेंगे, हम अपना सच सामने लाएंगे, no matter how impossible and incredulous it feels। and this is just the kind of small effort I'm making। and I do feel कि ये जो प्लेबुक है ना, ये यूनिवर्सल है। जो ऑक्सफोर्ड में हुआ हमारे विश्वविद्यालय में भी होता है, जेएनयू में भी होता है, हर जगह होता है। ये कोई क्या कहते हैं आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ऐसी जो प्लेबुक है ये यूनिवर्सल है। और ये अपने जो स्टाइल है हर जगह रिपीट करते ही रहते हैं। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ कैन रिलेट कि उनकी वर्क स्पेस में ऐसा हुआ हो, जो एक मतलब फॉरेन कंपनी हो। सो मेनी पीपल रोट टू मी कि मैं एक फॉरेन कंपनी में काम करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो आई थिंक इट्स फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रियली टू अंडरस्टैंड कि सच में चीजें क्या होता है, और जब ऐसी चीजें होती है तो इसके साथ डील कैसे करते हैं। क्योंकि इसकी डिस्कशन आपको मेन स्ट्रीम में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा आपको ऐसे ही मतलब एक आध बुक्स के पन्नों में मिलेगा। एंड आई रियली होप दैट इट एम्पावर्स आवर फ्यूचर जनरेशन सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट आवर वर्ल्ड। and the whole stereotype that the west is supreme, that hubris really breaks, and that we are truly really able to reclaim our identity in the best sense, and we are not very naive to that supremacist thing. So that's the whole story of the book. And yeah, I mean, I think I'd like to end my monologue with that. बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया, और स्पेसिफिकली जो ड्रॉप आउट्स के नाम लिए आपने, वो हमें जानने चाहिए कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा जी गांधी ड्रॉप आउट्स हैं, और लोग उनके फॉलोअर आपको वो चीज़ से बात करते हैं। सो हाउ आयरनी। मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। रश्मि जी, मैंने पुणे में सुना था आपसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में, जो स्ट्रेस आपको था, जो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी, और जितना बदतर सलूक आपसे करने की कोशिश वहाँ पे हुई, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं?
well, देखिए जब आप पे एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है, व्हेन यू आर बीइंग थ्रेटन्ड ऑन अ डेली बेसिस एंडलेसली, तो मानसिक संतुलन का बिगड़ना काफी, क्या कहते हैं, नॉर्मल है। एंड आई थिंक द स्ट्रेस इज क्वाइट अनइमेजिनेबल। तो मेरा वो एक दौरा भी था, एंड व्हेन आई वाज फाइटिंग दिस ऑन मेनी फ्रंट्स की इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, आप पे सोशल मीडिया पे आप पे लगातार वॉर चल रहा है, लोगों को आपका एड्रेस भी पता है, फिजिकल भी मतलब वायलेंस का थ्रेट है, आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सब एक साथ कर रहे हो, तो एक इंसान ना एक पॉइंट के बाद झेल नहीं पाता। तो आई हैड मेनी सिम्टम्स ऑफ स्लीप पैरालिसिस, ऑफ PTSD, all of these things. But I think really, really my dharma saved me. And I would read Bhagavad Gita, I would meditate, I would chant, really, and it cured me completely of everything. And today I'm really confident to say that none of the things I went through, or none of the trauma or the PTSD remains with me. I never wake up with a cold sweat or anything. I'm completely healed from that. And I think हम अपने ही सभ्यता को वैसे काफी डाउनग्रेड और डाउन ट्रोट करते हैं कि मतलब इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो सब कुछ है। इसमें एक इंसान को ये पुनर्जीवित कर सकता है, इतनी शक्ति है इसमें। तो वो मैंने रियली आई लिव्ड इट। इसे क्वेश्चन पूछने के पीछे इंटेंशन ये था कि आपकी फाइट सुन के जो हमारी माताएं भगिनी जो स्पेस सुन रही है, या फिर जो भी स्पेस सुन रहा है, अगर कोई ये स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो दे शुड नो दैट things which are very handy with us, they are much capable to resolve your problems, just like you said Bhagavad Gita. I'll move to next question. We have Sharang with us. Yes, Sharang. Namaskar, Rashmi ji. We met on the book launch of your book at Pune. So actually, I had many questions to ask you that day, but then I thought of reading your book, and then I said that okay, I'll ask someday. So today is the day. So my question is that you have quoted Winston Churchill in your book that Indians are beastly. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. People with beastly religion. So, what do you think is the root cause of the problem for this hatred against non-Abrahamic religion? Well, I think it's just a quest for supremacy. उनमें हमेशा से ये रहा है कि वी हैव टू बी सुप्रीम, एंड हम ही रहेंगे who will dominate world market forces, and who will hold all the wealth, richest, most powerful, everything that has to be us, and everybody else has to be the, क्या कहते हैं, follower or the slave to that. तो उन्होंने, I think they studied the Bharatiya civilization a lot before breaking and attacking us. So they know that हमारी जो पूरी साइकोलॉजी अटकती है हमारे धर्मा में मतलब अटकता है, that it's through our dharma that we derive our strength, something that even we don't, I think, realize to a very large extent, कि जो भारत था 33% of the world's GDP, it was based on a very dharmic way of living. We followed dharma, and that's why we were the most successful and one of the civilizations. So that very essence which made us and so ready with solutions on multiple fronts. And I think they really did study us. They studied us, in fact, for hundreds of years before they really broke our backbone, they broke our spine, and they do realize this. Abhi जो है, I'll give you a contemporary example, historic example से ज्यादा, जब चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने हमें ये गाली दिया कि अरे आप तो मतलब इतने गरीब हो, आप टॉयलेट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जबकि वो हमारी मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द चंद्रयान मिशन टू द साउथ पोल इज रियली एन एक्सपेडिशन टू फाइंड हीलियम रिजर्व्स। हीलियम इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, एंड जो भी पहले पहुंचेगा उसका उस पर हक रहेगा, एंड द अदर कंट्रीज विल हैव टू आजीवन उन्हीं से खरीदना पड़ेगा उनको। तो इट विल डिक्टेट ना कि हु रन्स द वर्ल्ड, हु इज द रिचेस्ट। Rashmi, I think we are having issues.
Sorry, but we got static again with your voice. So if you could just readjust and just repeat the last two lines. Yeah. Thank you. Is this better now? Yeah, much better. Yeah, so as I was saying, when the Chandrayaan mission happened, they tried to tell कि आप तो गरीब हो, आप जाके टॉयलेट बनाओ, आप क्यों चंद्रयान मतलब चंद्र पे जा रहे हो? And what people don't know really is that the Chandrayaan 3 mission to the South Pole really is to find helium reserves. Helium is supposed to be the future of energy. जो पहले पहुंचेगा उसकी उस पे हक रहेगा एंड बाकी सब लोग उसी देश से खरीदेंगे. मतलब दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आप जाओ, आप कब्जा करो और फिर आप ही के इस पे दुनिया कायम. तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट एंड इसीलिए वो एड होमिनम अटैक्स करते हैं हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, हम पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं. एंड हमारे यहाँ इतने लोग तो हैं ही जो मतलब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं and they become prey to all of these allegations about us having to build toilets and not really going on the moon because they don't see the big picture really. And the entire psychology behind vilifying our dharma is really to make us feel like we are inferior people ताकि हम उसी inferiority complex में बीपीओ के नौकरी करें और ना कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करके दुनिया को राह दिखाए. दैट इज द ओनली क्या कहते हैं द काइंड ऑफ गेम दैट गोज ऑन. इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. विलिफिकेशन, स्टीरियोटाइपिंग, इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टू कीप अ सोसाइटी सबजुगेटेड एज अ स्लेव. एंड दैट इज समथिंग जो हमारे लोग ना समझते नहीं है, समथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड. तो जब भी कोई हमें कहता है, जो गाली देता है कि बीसली पीपल विद अ बीसली रिलीजन, all he's trying to make us feel is inferior so that we do not go out there and reclaim things. and हमें अंदर से लगने लगे कि अरे हम तो मतलब बिछड़े हुए लोग हैं, हमें जो मिला है ये बहुत है, हम चलो करते हैं अपनी जिंदगी भर बीपीओ वाली चापलूसी वेस्टर्न कंट्रीज की, ना कि हम खुद से कुछ बनाएंगे, ना कि हम खुद से कुछ करेंगे. दैट इज द मेंटालिटी, दैट इज द होल वॉर दैट गोज ऑन. एंड वी नीड टू रियली रियली रियलाइज कि ये जो हेट्रेड है, it is in a way envy that they use very efficiently as a means of psychological warfare. Definitely. Ma'am, I have a hand raised from someone who helped me to host this space with you. Very familiar, our own Samir ji. Samir ji, namaskar. Of course. Namaste, Samir ji. Namaste, namaste. How are you, Rashmi? Very good, very good. Thanks. So Rashmi ji, since you praised Pune and Punekers for their great questions to you in Pune, I think I also have one right because that day I could not ask you that question. So my question is to you कि अगर फिर से आपको फर्दर स्टडीज के लिए ऑक्सफोर्ड जाना पड़ेगा और वहां पे अगर फिर से इलेक्शन होगा तो आप क्या फिर से प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ेंगी? अरे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, हमारी साइलेंट मेजोरिटी जा कहाँ रही है. एंड आई रियली फील कि आज भी भारत में जो मोदी जी का विरोध हो और एक फिलॉसफी का विरोध हो बहुत लोग करते हैं और उनको प्राइम टाइम स्लॉट भी मिल जाता है, उनको न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस भी मिल जाते हैं, उनकी नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है. बट वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी जिनके पास बहुत ही क्या कहते हैं लाउड वॉइस है. दैट इज जस्ट द मैटर ऑफ थिंग्स. एंड दे हैव उन्होंने एक सिस्टम पे कब्जा किया है, प्रसार भारती सिस्टम का जो होता है, प्रसार और प्रचार के जो सिस्टम पे उन्होंने कब्जा कर लिया है. दैट इज इट. और उससे बाहर उनका कुछ यही नहीं है, क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस नहीं है. बट वी शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. वी शुड रियली कम्बैट दैट एज वेल बिकॉज नैरेटिव की अपनी स्ट्रेंथ होती है एंड उससे फ्यूचर जनरेशन स्पेशली यंग लोग बहुत इफेक्ट होते हैं. True. That's true. So good. I'm hoping that you go for further studies and you will be president one more time, and you didn't have to resign at that time. That is for sure. आपके आवाज में जो एंथुसियाज्म थी मैम, वो तालियां बजाने पे हमें मजबूर कर दिया. जितना उत्साह आपकी आवाज में था, दिस इज द ओनली थिंग वी कैन गिव एज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू.
I'll move to next question. My friend from Belgaum, and I would request him ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂದು ಮೇಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಅಭಿಜಿತ್. Hi Rashmi. Hi, namaste. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮರಾಠಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಐ ವಿಲ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮರಾಠಿ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್? ಸೊ what I basically asked Rashmi was, now people like Rishi Sunak coming in, will the things change in the perspective? Abhijit avare namaskara. Thank you so much for that question. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ. So to answer this question, मुझे लगता है कि जब आप अगर देखोगे क्लोजली, मैंने काफी क्लोजली इस पॉलिटिक्स को फॉलो किया था, जब लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में वो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की जो रेस हुई थी, तो ऋषि सुनक वाज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट टू बी प्राइम मिनिस्टर, बट लिज ट्रस जीती बिकॉज दे स्टिल अ वेरी रेसिस्ट कम्युनिटी. जब लिज ट्रस ने पूरे इकोनॉमी को 2 हफ्तों के अंदर डुबा दिया, इरिडिमेबली डुबा दिया, तब उन्होंने मजबूरी में ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया. और अगर आप वो पूरा कैंपेन देखोगे, ऋषि सुनक हैड आंसर्स टू ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था. सब लोग इस बात का, इस एक फोटो बहुत चला था तब कि वो और उनकी पत्नी देव दीपावली में गो पूजा कर रहे हैं. उसी फोटो को विलिफाई कर करके उसको चलाया गया उसी टाइम पे, जब लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी ब्रिटेन की. और अभी भी जब वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरा, मतलब लिज ट्रस की डिजास्ट्रस पॉलिसी से ब्रिटेन को निकाला है, ब्रिटेन में स्टेबिलिटी लाई है फ्रॉम years of mismanaged policies and bad policies really, which have been impacting that entire community and country. उनको आज भी विलिफाई किया जाता है. ही वेंट टू कैम्ब्रिज और उन्होंने एक स्पीच दिया था कि आज रामचरितमानस की एक इवेंट थी कैम्ब्रिज में, एंड ही गोज देयर एंड ही सेज कि मैं यहाँ हिंदू आइडेंटिटी को हिंदू के नाते आया हूँ यहाँ पे. तो अलग एक आर्टिकल आया था कि रश्मि सामंत लोग मोदी का यहाँ पे पर्चा बुलंद कर रहे हैं. So they use all of these things really to attack. That's it, because इनको कि हमें अपने मेरिट्स पे ये लोग नहीं कर सकते हैं. में हमें कभी हरा नहीं पाएंगे. हमारी इच्छा का कोई तोड़ है और हमारी क्वालिटी का भी कोई तोड़ नहीं है. बट आई टेल यू वन थिंग अबाउट द भारतीय पीपल, अबाउट द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड. हम लोग सर्वाइवर्स हैं. हमें आप डिस्क्रिमिनेट करो, हमें पुश करो, हमें आप कॉर्नर करो, हमारे साथ आप कुछ भी करो, हम वी नेवर यूज इट एज एन एक्सक्यूज नॉट टू एक्सेल. वी एक्सेल डिस्पाइट टेरिबल कंडीशंस. अगर आप वो बुक देखोगे तो उसमें मैंने लिखा भी है कि जब मैं कैंपेन कर रही थी तब भी मेरे खिलाफ काफी बड़ी संख्या में लोग थे और उन्होंने एक्टिवली मेरा कैंपेन डिरेल करने की बहुत कोशिश करी थी थ्रू प्रोसेस. तब भी वी नेवर यूज इट एज एन एक्सक्यूज कि अरे देखो ये तो अनफेयर इलेक्शन है, हमें लड़ना नहीं चाहिए. हम फिर भी लड़ते हैं और हम फिर भी जीतने की पूरी कोशिश करते हैं. जब लिज ट्रस ने ऐसे अनफेयरली जीत लिया था वो इलेक्शन, तब भी ऋषि सुनक ने ट्राई करना बंद नहीं किया और उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दे दी कि अरे देखो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग इतने रेसिस्ट है. ही स्टिल ट्राइड. आज भी जब उनको ऐसे मतलब गलत सलत कहा जाता है, ही स्टिल डज नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज नॉट टू एक्सेल. एंड आई थिंक वो हमारी खूबी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइवर्स एंड वी आर अनलाइक any civilization on this great planet. Wow. I'll move to next question. Devashish. You must be aware of Devashish, Rashmi ji. No, she is not, because जी हाँ. Anyway, Rashmi ji, my question to you is that initially आप पे जो इल्जाम लगे वो हिंदुत्ववादी, एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामोफोबिक ऐसे लगे.
बट आई थिंक वो कुछ काम नहीं किया, तो आप पे एक बहुत एक सेंसिटिव इशू जो है वेस्ट में, एंटी सेमिटिज्म, उसका आप पर एक चार्ज लगाया गया। सो कैन यू टेल कि क्या वो एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि एंटी सेमिटिज्म यहाँ पे अगर किसी को पता नहीं होगा तो उनको भी पता चलेगा। जी जी, हैप्पी टू इलैबोरेट। तो एंटी सेमिटिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे अभी इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदूफोबिया का कॉन्सेप्ट है, वैसे एंटी सेमिटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है फॉर पीपल हु हेट द जूइश कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने होलोकास्ट सहा है ड्यूरिंग द एंटायर नाजी रूल इन जर्मनी। देयर वाज अ होलोकास्ट वेयर जूइश पीपल वर किल्ड, they were murdered really. तब एंटी सेमिटिज्म का कॉन्सेप्ट आया, एंड एक्चुअली द जूइश पीपल हैव डिफाइंड इट वेरी ब्यूटिफुली। उनकी एक डेफिनेशन है जो IHRA नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अप्रूव करके, इट्स अ लीगल डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज hate speech against Jewish people. It's a very beautiful definition that they've come up with, and I feel like every community really needs to come up with a definition. Every persecuted community, like the Hindus, who have just been, hated upon and murdered for their identity, like the Jewish people. तो दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज इन यूरोप, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि यूरोप में ही तो होलोकास्ट हुआ था. The Holocaust happened in Germany. It also, there were concentration camps in Poland as well. In Polish borders भी there are a couple of क्या कहते हैं concentration camps. उसको आज भी as preserve किया गया है, and people can really visit these places, and there are memorials and all of that. So it's a very sensitive topic in the West. And दिस इज अ चार्ज जो आप एक हिंदू पे कभी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हिंदुओं ने हमेशा आश्रय दिया यहूदियों को. Jewish people were always welcomed in भारत. In fact, the Jewish people have thrived in भारत. उनकी पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ है. वी आर द, इनफैक्ट हिंदुओं को माना जाता है एज द ओनली रिलीजन इन द एंटायर वर्ल्ड विच हैज नेवर परसिक्यूटेड द Jewish people. persecuted Jewish people violently. उनको मारा है बाकी क्या कहते हैं रिलीजन के लोगों ने. इट इज अ वेरी प्रूवन एंड इट्स अ वेरी फेमस लाइन दैट द हिंदू पीपल हैव नेवर परसिक्यूटेड देम एंड हैव ऑलवेज वेलकम देम. बट इट इज अ क्या कहते हैं वेरी वेरी सेंसिटिव चार्ज. तो ये चार्ज मुझ पे लगा दिया गया क्योंकि बाकी चार्जेस इतने चल नहीं रहे थे उस टाइम पे, इतना कि मुझे रिजाइन करने की कगार पे ये लोग लेके आए. तो मेरा एक फोटो था एट द होलोकास्ट मेमोरियल. तो बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी में एक होलोकास्ट मेमोरियल है जहाँ पे मैं गई थी इन द ईयर 2015, जब मैं बहुत छोटी थी. आई वाज स्टिल अ टीनेजर एंड आई वाज इंटर्निंग इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज देयर, एंड आई जस्ट विजिटेड द होलोकास्ट मेमोरियल इन बर्लिन. आई हैव a photo there, a very respectful photo. I have actually printed that photo along with the caption in my book for everybody to see. उस पे एक कैप्शन लिखा था मैंने, that this memorial casts a hollow reflection of the past atrocities, and reflecting on it gives us the power to live, hoping for a better future. So it was a very respectful, caption saying that okay, Holocaust was bad, and reflecting on it gives us power to move on, but really hoping for a better future, not to repeat our mistakes as the world has. The world has made terrible mistakes, and it gives us the power to move on, hoping for a better future. So that was my line there. So there was a, if you analyze the line very carefully, it says casts a hollow reflection. So casts a hollow is a pun, na? There's a thing called pun on Holocaust. So they said, oh, it is a pun, and because there is a pun in the statement, it is anti-Semitic. And the charge was put by people who are not Jewish. They were just random people जिनको कुछ बनाना था बात का बतंगड़. तो ऐसा होता है ना, आपको कहना कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आप ग्रामर नाजी हो, आप नाजी हो, आप हिटलर के ये हो, क्या कहते हैं, फॉलोअर हो, ऐसे. द चार्ज वाज सो लुडिक्रस क्योंकि एंटीसेमिटिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, और मेरी जो कैप्शन है, मेरा जो फोटो है, डज नॉट कम एनीवेयर इन द definition of anti-Semitism. Any Jewish people, any Jewish lawyer, if they see, nobody will find offense at it. In fact, it is really paying homage to what they went through. And इन्होंने बस एक grammatical क्या कहते हैं
ग्रामर में जो होता है पन, जैसे होता है क्या कहते हैं प्रोवर्ब्स होते हैं, बिकॉज देयर इज अ पन इन द क्या कहते हैं सेंटेंस, उन्होंने कह दिया दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल, यू आर बीइंग एंटी सेमेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट कोई भी ना अपने चार्जेस को कहीं पे एस्टैब्लिश नहीं किया जाता. जब भी मोदी जी को फैशिस्ट बोलते हैं लोग, इस कहते नहीं है कि क्यों फैशिस्ट है, क्योंकि वो कह नहीं पाएंगे ना क्यों फैशिस्ट है, प्रूफ तो नहीं है इनके पास. ऐसे उन्होंने मुझ पे एंटीसेमिटिज्म का भी आरोप बस लगाया था विदाउट एनी प्रूफ. एंड बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव इन द वेस्ट, ये चल गया, ये चल पड़ा, एंड इट बिकेम वेरी ह्यूज. And that is again making my point about propaganda, about biased media, about media amplifying things without any proof, and how it can really, really create disastrous movements across the world. Definitely. We'll move to next question. Yes, Columbus. Hello, Rashmi ji. Ji, namaste. Generally, students have really emotional connect with their college or university. So, how is it in your case? Means you have some fond memories, or you remember your struggle while thinking about your university? I think it's a very mixed feeling, really, and I mean, I still go back to Oxford. I go back to the UK. I think 2-3 times a year for work, and I do go back on campus. I do have some great memories as well on campus, really, and I think it's a mixed feeling. And you know, as you grow up, life is not so black and white, ना. जब आप छोटे होते हैं तो आपको काफी चीजें मतलब you're in a very secure environment. But I think I'm really used to this now of having to face, you know, a very mixed world, having to face the good and the bad. And I think taking the good with the bad is necessary. The nature is very beautiful at Oxford. So I do enjoy going back and, you know, taking a walk, because no matter what, I'm still pretty much a student there. I was a student there. So yeah, I think it's truly a very mixed feeling, too many emotions really. Wow. We have next question from Gautam Govitrikar. Dr. Gautam, yes, please. Hi, Rashmi. Great monologue as always. And this is the second time I'm listening to you, and I just keep on getting amazed at your mental toughness. I really don't know how you faced everything that you did. So my question to you is twofold question, but it's the same point. I've been fortunate to have been able to study abroad. And I don't think if I would have faced what you faced, I would have had the courage to even go back to graduate. I would have probably just to fulfill my responsibilities, but I don't think I would have fought back the way you did. And I'm also a young parent, and I'm not sure as a young parent I would have the courage to tell my kids to fight back the way you did. So can you just tell us, while we all know what you did was absolutely right, how you actually found the courage to be a young girl in a foreign country on a student visa, having spent so much of money, time, and energy to actually fight back, knowing that the entire ecosystem was fighting against you without any basis? Well, I think that's a very valid question, because so many students have reached out to me on DM saying, you know, they're going through something similar, can't find the energy to fight back, and so on and so forth. I believe that if we don't fight back, it will follow us for a lifetime, because the ecosystem is so vicious that they don't stop until they, you know, knock you off the edge of the world. In fact, you know, one of the biggest threats I used to get is that यार हम ना we'll never let you get a job anywhere. हम तुम्हारे सारे employers को लिखेंगे कि you know you were racist and transphobic on you were anti-Semitic on campus. You know you're an Islamophobic. You're this and that. Every time you know you start working somewhere, we'll find you and we'll write a letter to them. We'll do this. We'll do that. We'll destroy your life. Your future is destroyed. Ye wo. Then I realized that you know the only way to re-establish something, and you know if you want to truly achieve what you want to in life, the only way to do so is to fight back. And if I don't reassert who I am and what I am, and then the fact that they're wrong, it is going to haunt me for the rest of my life, and that I won't be really able to achieve my fullest potential. I'll never be able to take on a leadership role ever in my life, because you know ek kaale saye ki tarah they're going to follow me.
everywhere because they're that vicious. I'll tell you, they have a very good memory. They're not like us people. They're not forgiving. They don't forget things. They live off of fear, and it just makes them more powerful. The more fearful you are, I think that is something really I really understood very early on, and I think that gave me really the power to fight on. I really, really had to fight back because I was defamed to an extent that I think my future would be bleak if I did not fight back. And fighting back taught me that you gain a lot more respect when you do fight back, and that you really need to establish who you are. You need to really assert yourself if you want to be respected. Uh, I'm even respected by those who came after me today for having survived all of this, and for having shown them that that it's nowhere their place, and they're fearful of me and they don't come after me as much as they did before, and and they've kind of mellowed down, and and they realize that they can't go after people. So I think that message really needs to be sent, and the more we back off, the more they'll come at us. It's just, I think, a never ending kind of a vicious battle, and there's always light at the end of the tunnel, and you just end up stronger and better by the end of the day. Before I move to next question, I just have to announce that the link, Amazon link of the book A Hindu in Oxford is pinned इस पेज के ऊपर के पिन ट्वीट को हमारे सारे लिसनर्स और फॉलोअर्स देख सकते हैं. I must tell you, this is one of the amazing book and you should read it. So please follow the link, and if you feel, just go and have a read for that book. The next question from Makaran Joshi. Yes, Makaran Kaka, please. Yeah, good evening, Rashmi ji. Actually, I was present when you was in Pune for the book publication and all that. I just wanted to ask you a question that what are your future plans? I get asked this a lot. I think taking things one day at a time and really, truly living everything vicariously. I think India has so much potential. I'm just looking for, more and more ways to be active within society, to help society, serve society, speak out when, I see that people are lying around and, using false narratives as clutch for unfair means, really. So I think just helping and contributing in small ways that I can, really, and that's big part of what I want to be doing in the future as well, and just be part of Bharat's growth story, really. Beautiful. We have one more question. We have Nilima Govitrikar with us. And before that, Gautam hand raises there. Gautam, please go ahead. Given that Nilima Govitrikar happens to be my mother, I think I have to defer to her. So, Prasad, please don't cause troubles in the Govitrikar house. Nilima Kaku, namaskar. बोला, please बोला. मला माहिती होतं, but since deliberately I tried that. Namaskar. Hello, Rashmi. Good to hear you again. I don't have a question, but I want to tell you something. I was there at your book launch in Pune, and I got 4 copies signed by you, and then as 2 for my brothers and 2 for my children, 2 children. So as the program got over and I was walking on Prabhat Road with the 4 books in my hand, a young man kept following me till he caught up with me, and he asked me, "Ma'am, you have got so many books signed. I wanted to get a signed copy from Miss Samant, but sorry, I don't know how I made that mistake. But the books got over. So can you please give me one copy?" I said, "I'm really sorry. I wish I could give you, but I have these 4 people in my mind. But I'm sure we'll get another opportunity for. There must be so many of them in Pune who would want a signed copy. So Rashmi, I think you need to make another trip to Pune and specifically for a book signing program. Plenty of people. And please ask Salunke booksellers to send much bigger quantity than they had last time. Thank you. Will do, Nilimaji. That's very kind of you to say. Thank you, Kaku.
Last two questions, maybe for one from Sharang, one from Dr. Gautam. Go ahead, Sharang. Uh, Hello, Rashmiji. Considering the contemporary situation and the way the Western world is setting its narratives on Bharat, uh, what do you think that there is a need of blasphemy laws for Hindus living across the world, just like there are anti-Semitic laws across the world? So, what are your views on that? I think that's a very good question. I think, unfortunately, we live in a Western framework, really. If you look at the tenets of our dharma, then, it's nowhere in our dharma ki, aap aise kuch karo to, defend yourself. And, you make these hard and fast rules to chastise other communities who are coming at you. But the problem is so severe, and the kind of framework that we live in is so Western that I think it's essential to create a global definition and to draw a line so that they can't go about doing things with us which they won't do with any other community. जैसे उन्होंने लिखा Oxford is not ready for a Hindu president. It is nowhere persecutable as a criminal offense. It'll become a civil offense, defamation, max to max, but वो criminal offense नहीं बनेगा. Same thing if it's written about, say, a Muslim person or a Jewish person. It becomes a crime, really. It becomes a non-bailable offense in many countries because they've defined it so well and they've lobbied for it in all governments within legal frameworks. So I think when Hindus truly have become global citizens, we need to come up with means and ways to protect our own people in this highly evolved and highly vicious world. So I think it's very necessary to see really what other faiths are doing and how they're leveraging all these systems to ensure that their people are not persecuted, and sometimes even put false accusations, really. And I think even to counter that, we need to have certain lines and boundaries drawn so that we don't get treated like third class, fourth class citizens everywhere. And I think that's very much necessary. As someone who's traveled, who's seen how legal systems across the world work, I think it's very much necessary for us to define what constitutes hate speech against Hindus, and sort of underlining the entire genocidal trauma which we have faced at the hands of different communities, so that if especially the hate is directed from these specific communities, then it's treated very seriously. Yes. Dr. Gautam? So thanks, Rashmi. Follow-up question for you. Just the way that we have the phrase NRI, there are certain people living in India whom I define as RNI, which is resident non-Indian, and then there are certain NRIs who live in the UK whom I called as Sepoy, is basically an Indian who is not happy at seeing another Indian do well. And so I felt it was really sad that the professor who basically wrote the article against you and basically almost led the movement against you was of Indian origin. If I'm not mistaken, he was from India itself. And so, what can we do at our age, I feel our generation and further, to prevent this brainwashing that is still happening, the colonial hangover that is still happening because of all the people to have opposed you? The fact that it was an Indian professor really made me very, very sad. And unless we take concrete steps to avoid it, I think it is just going to keep on continuing. Well, Gautamji, great question. I think there is so much that we ourselves need to do because, our own people have been reasons of our downfall multiple times. People helping those Mughal generals were unfortunately, our own people. हमारे ही दरबारी होते थे. Even during the colonial period, a lot of our own generals really helped and betrayed their own kings. Even today, I think one of the biggest betrayals we get is from our own people who suffer from a variety of, things. One is, they're inferior because of the entire Macaulay education system that's, made them. So I think really on a broader sense, we need to change. We need to ensure that the education system changes and that we vote for, parties which promise a change in education system and really go back to a self-asserted, independent education system. That is something that needs to happen on a broader sense. Now, I know that, it's not an immediate gap solution कि आप रुकोगे जब तक education system बदलेगा. I think it's also necessary for us to
educate our children, our peers, by gifting them really books which talk about these struggles, and talk to them about this story, really tell them about these things, counter them if they don't be the silent minority majority really. If somebody says something antithesis, ऐसे मत कहो कि अरे यार इससे क्या बहस करेंगे, रहने दो उसके opinions अपने लिए. You have to really counter them, take that challenge. And even if you feel like कि you don't want to put yourself out there, you really need to put yourself out there, do that, gift books to children, start, I think our people don't read. That is another problem. If you see a lot of what happened to me, all that propaganda, all that cancel culture that they were using is basically what happened during the cultural revolution led by Mao Zedong. And I feel that we don't read enough. If we read enough, we'll realize that history just keeps repeating itself, and those who don't take cognizance of history are bound to repeat their mistakes, repeat everything. So really, like, develop that reading habit, really gift each other books, suggest each other books, give books to kids, really push them for all of this. And I think we also need to bring these issues into popular culture. I think films and different kinds of caricatures, they're the strongest ways to get to people. I know we are still a very nascent ecosystem to be doing that, but more and more we need film adaptations of stories which speak of our side, which really show the world in black and white, so that it percolates through popular culture as well, to people. But I think the bottom line is stop being the silent majority. Even if you feel like, okay, your one of your closest friends has a disagreement on something, respectfully do disagree with them and do put up your point, and never shy away from um taking on someone in a debate or anything. Really, we need to stop being the silent majority. Really write about things, especially you have to articulate more and more and more and more, because the 2000 or the 2 million times that they lie has to be countered with 2 million truths. So every time they lie, we need to reassert the truth. So really, I think that's the overall message, to make sure that in the future, at least, that we don't lose our footing on our truth and our entire movement. Great answer. I hail from Pune, and if there's one thing that you cannot accuse us of, it is our reluctance to be a silent majority. We are a very, very vocal minority, even if it's just one of us. But on a serious note, thank you very much for the kind words that you said about my city and my people. The program that day in Pune was absolutely fantastic, and we all would have loved for it to have gone on for an hour or so more. I want to thank you for taking out the time. I know you probably are reciting the monologue that you gave us at the start in your speech, because you must have said it again and again and again, but it's really amazing how you're able to do that. I want to thank Samir Kulkarni for facilitating this space with you. Without that, we were not really expecting to pull this off. So the fact that you are here today, big thank you to him. Also to Devashish, and to our host, Raosaheb, who's really done a great job hosting this space. Before I hand it back to him, I'm going to take the liberty of asking you one more question. And the question is that whenever a biopic is made on your story, whom would you want to play your character? Oh, wow, that's an interesting question. Who would play my character? I don't know. I mean, all the actors are so woke. I don't know who would want to Precisely, play that's my the reason I character. asked you the question, because that is good. That's exactly why I asked you that question. Probably I'll have to end up playing my own character, because there's nobody who's, willing to play a character like that. I'll have to take up acting. I think that's the unfortunate thing, even if there are stories and there is something coming up, unfortunately, they, boycott the story in such a way that nobody would be willing to play this whole thing. But I'm sure, I mean, I think so much of theater that we see, maybe in Pune, in Mumbai, is also, we have gems like Nana Patekar, we have gems like Anupam Kher. I'm sure we can find a female who's like that, who's an emerging great actress, not somebody who's there because their father or mother is actress, somebody who does not rely on teleprompters and multiple shots, and who can get it right in the first shot itself. I'm sure we'll find a great actress in one of these theaters.
that our great country is putting this thing. I think it's all a matter of will and looking for these people, connecting with them, and really empowering them. Amazing, amazing. Thank you so much, Rashmi ji, for your valuable time. I'll just brief. We started this Ganesh Utsav 10 days with Kunalji Tirak, who briefed us about the history of Ganesh Utsav set by great Lokmanya Tirak, followed by musician Kaushal Inamdar, who is a very renowned musician in Marathi industry. Kaustubh Kasture briefed us the 300 year of Peshwa Samrajya. More than 3 hours he spoke continuously. Again, we had excellent administrator IS, ex-IS Avinashji Dharmadhikari, followed by our very own Shefali Tai, who explained us the history of temple, the hidden stories of Indian temples. Yesterday we had famous Marathi director Dikpal Lanjekar, who dedicated his entire life and career to Chhatrapati Shivaji Maharaj. And we are ending our Ganesh Utsav series with such a great fighter spirit and amazing orator like you. We could not expect anything better than this. And thank you so much to all our listeners, speakers. We will be continuing keeping this journey going on, but for the time being, for the Ganesh Utsav, we are taking a smaller pause here. We will come up with some more such spaces, and Rashmiji will certainly seek your help to get connected with noble souls and great orators of Hindutva like you. We would love to host them with your help. We are always with you, and thank you. We are all happy to have you and host you today. Thank you so much, Jay. Lovely interacting, and of course, happy to help with anything that's needed. Namaste and Shubhratri. Shubharatri. Jai Shri Ram.